अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 ऑनलाइन निकाह which had taken place. फर्जी निकाहनामा। 7/9 को जो शादी हुई सर। है उसको काजी ने डिनाई किया है। जी। इन्होंने यही तो प्रोड्यूस किया था ये जब आपकी फोन मेरे द्वारा जीवन साथी .com में मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन के साइट पर एक इस्माइल नाम के व्यक्ति ने समय ज्यादा होने से 9:30 बजे से 10 बजे के लगभग मैंने इस्माइल से पूछा कि काजी साहब और गवाह नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आज बहुत रात हो गई है तो मैं कल आ जाऊंगा, आप आऊंगा और कल सुबह निकाह करवा दूंगा और तुम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेना। मैंने उससे कहा कि मैं चली जाती हूँ, तब काजी साहब आए तो मुझे बुला लेना। तो वह मुझसे बोला कि इतनी रात को दुल्हन के लिबास में मत जाओ, चेंज कर लो। मैं कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम चली गई। मैं जब वापस आकर अपना फोन देखने लगी तो इस्माइल ने मेरा मोबाइल ले लिया और सिम भी निकाल ली। मैं मोबाइल ढूंढने लगी तो इस्माइल मुझे पास बुलाने लगे और छूने लगे। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा तो मैंने मोबाइल मांगा तो उसने कहा कि मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। बाथरूम में पता नहीं इस्माइल ने कैमरा लगा रखा था या मोबाइल रखा था। वापस आकर मुझे कहने लगा कि इधर आओ, तुमको मोबाइल दिखाता हूँ। इस्माइल ने मेरा फ्रेश होने व कपड़े बदलने का पूरा वीडियो बना लिया था। मैंने उससे कहा कि मैं काउंटर जा रही हूँ, मैनेजर को बताती हूँ। उसने पता नहीं किसके नंबर पर मेरा वीडियो सेंड कर दिया था। वह मुझे बोला कि अभी तो ये वीडियो ऐसी जगह भेजा है जहां से कभी कहीं नहीं जाएगा, अगर तुम ज्यादा एडवांस बनोगी तो वायरल कर दूंगा। उसने मुझे कहा कि मुंबई में तो यह सब आम बात है, आ जाओ मेरे पास। वीडियो की धमकी देकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार कर और शारीरिक संबंध बनाए। मैं रो रही थी। उसने मुझे दिनांक 15/9/20 की रात से दिनांक 17/9/20 के दिन के 12 बजे तक लगभग 12-13 बार मुझे डरा धमका कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये जो पूरा मैरिज का सिस्टम था, सर ये मैरिज हुई नहीं ऐसा काजी ने सर्टिफिकेट दिया है कुछ। सर 954 जान, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पसीना पसीना हो रही थी मेरी जान, बहुत डर लग रहा था। आज से हम एक जिस्म दो जान। पोर्टल देखिए, आप हमारे साथ वो कर सकते हो जिसके लिए हम आपको रोकते थे। Explain one thing, माय लॉर्ड। that when she had entered into a nikah-nama, जी then what was the need for filing an FIR on? प्लीज अल्लाह के वास्ते बात करिए। मैंने इस्माइल को निकाह में 28,999 रुपए की घड़ी देने के लिए खरीदी थी। इस्माइल मेरी घड़ी और सोने के कान के भी ले गया। मैंने घर जाकर देखा तब मुझे पता चला। ये जो भाभी खुशी जो आ रहा है, जी ये जो कम्युनिकेशन जितने हैं, ये they are from that lady who undertook the work of arranging for a kaji at जी Nagpur. कौन किसकी भाभी है? दैट इज इस प्रकार के केस में हम कितने दिन आदमी को जेल में रखेंगे? मतलब a matrimonial dispute which has traveled to lodges earlier also in form of 438 and 482 is there in my first application under section 439. Prosecutrix admittedly is aged 30 years. 30. She lodged a report on 27/6/21 for an incident said to have taken place on between 15/9/20 and 17/9/20. 15/9/20 से 17/9/20 17/9/20 जिसकी उसने FIR लिखाई है 27/6/21 को. 27/6/21 My lord, as a matter of fact, my lord, if I may just invite your lordships to a document which is their lordship's own order. That was while considering the petition under section 482. जी If I may just forward that order to lordship's kind perusal. She had come before this Highcourt while the application for if I just forward, may I forward it to lordship's order? क्या बोल रही हो? जी Well, this was lordship's order where she had appeared. Lordship may turn over the next page. In the next page, lordship would find that she had come before this Highcourt and she has stated that there has been a marriage between the जी 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 अच्छा यस यस parties. नाउ आई रिकलेक्ट यस उसके बाद तो पाया गया वो सब शादी वगैरह वो सर अब मेरा निवेदन वो है कि वो सारी की सारी जितनी बातचीत है वो सब हो गया है, चालान पेश हो गया. The man is in jail. And it is nothing else except a fact that it is a dispute, a sequel of the dispute which has arisen subsequent to all these proceedings. Now, my lord, I have filed certain documents. If lordships are kind enough to kindly come down to those documents, I have filed those documents. Lordship may be kind enough to kindly come down to I number 1294 of 2023. 1294 yes Yes, these are the excerpts of the talk which has taken place between the
applicant and the prosecutrix on WhatsApp. जी And this phone was handed over to the police, जी which Lordship would find there the Panchnama जी that the police has returned this phone later on. जी Now, if Lordship are kind enough to kindly come down to page number 230. 230 Now, why I read this version, my lord, from page numbers, the marriage is said to have taken place on 7/9. जी On 7/9, marriage is said to have taken place on 7/9/20. जी And I take your lordship to the talks, the WhatsApp communication between them हाँ at page number 230. हाँ प्लीज कम My lords may be kind enough to kindly come down जी to the talk which starts from 10:38. 10:38 yes उसके नीचे वाले पे आ जाए 10:39.07 AM. जी खुशी. Now Khushi is the prosecutrix जी and the applicant is Ismail. कल की बात हुई है काजी से. Now this is the talk. This is the message being sent by the prosecutrix herself while she was at Bhopal and the applicant was at Mumbai. जी Then खुशी, कल की बात हुई है काजी से. अभी जस्ट भाभी का कॉल आया. जी कल के लिए बोल दिया उन्होंने. जी इस्माइल, कितने बजे टाइम? जी उन्होंने लिखा खुशी ताजुद. जी क्या फिर होता है इसका ताजुद मतलब It's early in the morning when अच्छा the holy time, what they say. जी Then खुशी, गवाह को रेडी करने के लिए करना है बोला है. मैंने तो रेडी हुई कभी भी पढ़ने को. Then 10:47 खुशी, मैं चाहती हूं कि फरिश्तों की अमीन शामिल रहें हमारी अमीन की सथरे. जी Then this was the talk which has this is the communication between them. And then lordship may be kind enough to thereafter be kind enough to kindly come down to the communication at page number 240 at page number 245. जी Now this was the online nikah which had taken place. जी We may come down to the talk of 7/9/20 जी at 17:1856 PM. 17 point 7/9 7.18 7.56. जी इस्माइल, जी शायद इस्माइल तुम क्या कर रहे हो? जी खुशी, कुछ नहीं, बस 9 बजे का इंतजार. The marriage had taken place at 9 o'clock in the night. जी Now this is the message being sent by her. Then we come down, my lords, slightly below जी 7/9 at 8:47. 8:47 yes मुझे आपसे कुछ पूछना है. Then there's a missed voice call at 9:04. 9 बजे शादी होती है. जी और उसके बाद ये है. Then it comes down 9:54 मेरी बीवी. Then she says, he responds, हाँ जान. 9:54 देख रहा था आपका मैसेज. 9:54 जान, मैं बहुत खुश हूँ. Then we come down to the next page. Then 7/9/2020. जी हाँ, अब तू बीवी बन गए हो. चुप ही. 7/9/2020 पे टाइम 9:57 my lords. 9:57 Apologize. जी हाँ 9:57. हाँ, अब तू बीवी बन गई हो, चुप ही करोगे. जी Then नीचे चलते हैं सर. 9:58 पे आ जाते हैं सर. खुशी, मुझे निकाह के टाइम बहुत घबराहट हो रही थी. मेरे हाथ पे ठंडे पड़ रहे थे. इस्माइल, अच्छा, अब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह. मैं पसीना पसीना हो रही थी. अब तुम मेरी बीवी हूँ. मेरी जान, बहुत डर लग रहा था. आज से हम वो लिख रही खुशी बोलती, आज से हम एक जिस्म दो जान. इस्माइल, हाँ. देन खुशी, अब आप हमारे साथ हर वो कर सकते हो जिसके लिए हम आपको रोकते थे. अल्लाह हम दोनों में मोहब्बत दे और बढ़ा दे हमारी लाइफ. So and so, and the version goes on. And then lordship may be kind enough to kindly see the communication keeps on going between them. And then जी she says that
he has to come down to Bhopal. For that, kindly come down to page number 253. 253, yes. 7:06 a.m. Good lordship, get sir. 253, yes. 253. Then we come down to the time 7:706. जी. होटल देखिए, वो लिखती है, मैसेज करती है, होटल देखिए, खुशी अभी और दूसरी लोकेशन में देखेंगे। खुशी, ये ज्यादा समझ ना आ रहा है। इसमें तुम देखो, जो तुमको अच्छा लगे वो बुक करो। Then we come down to page number 258, my lord. Now the marriage had been recorded. Page number, we come down to page number 258, my lords. Then kindly see 8/9/2020, 102.31. जी. नूरू सबा ही जहां तक फाइनल कर रही हैं। This is being sent by the lady जो आपको स्टार्टिंग में भेजा था। ओके, माशाल्लाह अच्छी है होटल। And then we come down to page number 260. Now this booking was also done by the lady herself. जी. And the booking was there from 15/9 for 5 days. Kindly come down to page number 260, my lords. जी. We come down to the record to the talks of 8/9/2020 at 10:1607. खुशी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। खुशी then 10:16 इस्माइल किसकी? आप तो डर कर कबूल कर रहे थे, जबरदस्ती नहीं जान, कलमा पढ़ रहा था। Then 10:16 मुझे भी सेंड करो, इंटरव्यू चल रहा था। Then अब वो टाइम थोड़ा कंफ्यूज क्यों होते हैं? आपने नहीं किया क्या? इस्माइल नहीं, कितने खराब हो आप? Then the communication between them about the marriage which had taken place on 7/9. These are the excerpts which are going on between the talks between them. Kindly come down to next page, page number 261. मुझको लगा मुझसे भी कबूल करवाएंगे, बट वो तो सिर्फ आपको बोले कबूल करे को, तब शायद उनको आवाज नहीं गई। उन्होंने सलाम किया, मुझे तो पूछे ही नहीं, तुमसे पूछे तो 3 बार, सिर्फ इजाजत ली उन्होंने। तुमने कबूल है 3 बार बोले। हाँ, तो लड़की से इजाजत ही लेते हैं, कबूल है शायद इस्माइल ऐसा कहा बोले। हाँ. Now this is the talks which are there, and then we come down. Of page number 263 about his coming to Bhopal. We come down to the next, if lodges are. सब तो ठीक है। एलिगेशन ये है कि ये जो पूरा मैरिज का सिस्टम था
सर मैरिज हुई नहीं, ऐसा काजी ने सर्टिफिकेट दिया है कुछ? सर मेरा निवेदन ये है कि आज की तारीख में हम उनकी बात मान लें, बट शादी करने ये इधर से ये आ गया, और उसके बाद में दे वर देयर टुगेदर, एंड देन द वेरी फैक्ट दैट द एफआईआर इटसेल्फ हैज belatedly lodged after 6 months, the charge sheet has been filed, and what I go down to indicate that the dispute between them is no longer is pertaining to the marriage. She doesn't want to continue with the marriage, and there's a demand by her, and that is why the lady herself had come down at the earlier occasion when that petition under section 482 was filed. Now, my lord, a fully grown up woman, aged about 30 years, enters a relationship, then lordship may be kind of to kindly come down to the next communication, which is there. Huh? Now, this is the communication with the sister-in-law of the prosecutrix. Now the gentleman, the so-called Qazi, felt scared after the orders were passed by lordships pertaining to the inquiry. He felt scared. He gave a statement. He never wanted to enter in all those realm of disputes which were being made. And this is the communication what I submit, my lord, that in fact a marriage had taken place between them. This is something which would be established during course of trial. And if we see to the first information report, which is also there, and her post conduct that she had at that juncture, it was an application under section 438. Now this is an application under section 439. Yes. The prosecutrix has been examined. No, she has yet not been examined. उनको एग्जामिन हो जाने दीजिए सर, हम जेल के अंदर बंद हैं. ठीक है. I mean jail. Charge sheet has been filed. Charge sheet कब फाइल हुई? Charge sheet has been filed against the applicant. On the charge sheet has been filed 1/12/2022. 1/12 को charge sheet file हो चुका. Now what I humbly submit, this is nothing else except a pre-trial detention of the applicant. I have brought down before lordship, my lord, and today there is no chances that I would run away or do anything. I had made my application for before this High Court. My first application came to be considered under section 438, which was rejected, which was not placed thereafter. I filed a petition under section 482. In the petition under section 482, the lady herself came before this High Court and made a statement that it is nothing else except a predominant matrimonial dispute, which has been given shape of a case under section 376. Now, if lordships are kind enough to kindly see to the FIR, explain one thing, my lords, that when she had entered into a nikah-nama, then what was the need for filing an FIR on 27/6/20? Sir, the reason I'll come down to it, sir. The reason for lodging this FIR was between them disputes pertaining to the marriage had taken place. Okay. Why the dispute came down, Malad, it is already there. Malad, lordships are just kind enough to kindly come down to communication between them at page number 344 and page number 345. Malad, the booking was done from 15th to 20th. The man had to leave because his father had become critically ill over there. And there was another thing which arose between them, that because of the anxiety between the applicant, he was not able to perform that potently well what is being narrated to me. If lordships are just kind enough to kindly come down. Now this is the communication immediately after the man had left Bhopal and he had to leave and go down to Mumbai. If lordships are just kind enough to kindly come down to page number 344. 344, yes. The time is 7:10:07:06. 7:10. 10:07:06 पे. सर 11 बजे का जो गांधी जी का सर स्टैंडिंग ऑफिस. अच्छा, sorry. गांधी जी का. I'm sorry. Thank you. Page 344. 344, sir.
तुमको नहीं अच्छा लगा तो सॉरी, मुझे जो फील हुआ वो बोल दिया उस टाइम ही तुमको। मेरे निकाह में खुशी, मेरे निकाह में अगर एक अंधा भी होता तो वो मेरा नसीब था। जी मेरा मेरा निकाह में अगर एक अंधा भी होता तो मेरा नसीब था। मेरी ऐसी आदत नहीं किसी का दिल दुखाने की। आराम करो, सो जाना आराम से। आ गए जो बोला माइंड मत करना। देन शी डिलीटेड। देन एक बात तो साबित हो गई, अगर हम अपनी जान भी निकाल कर आपके कदमों में डाल देंगे तो भी आप हमें कभी खुश नहीं रख पाएंगे। एक ही रात में पहचान लिया मैंने आपको। देन नफसियत इंसान हो। अब क्या फिर ये मैसेज करता है, अब क्या बोलूं, फिर तुम सब जानते तो तुम्हारी नजर में गलत हूं तो मैं अब जैसा तुम्हारी सोच। देन द कम्युनिकेशन कीप्स ऑन। देन पेज नंबर 345। क्या आप मुझे खुश रख पा रहे हैं? जल्दबाजी में शादी की आपकी तरफ से थी, जैसा बोला सब किया आपने। उस 5 दिन का बोल के 2 दिन में चले जाना, क्या ये सही है? प्लीज अल्लाह के वास्ते बात करिए। मेरी क्यों क्यों मेरी मेरी जिंदगी और आखिरत खराब कर रहे हो? मुझसे मुझसे अब बात करिए प्लीज, अल्लाह सो एंड सो वास्ता। एंड then all these communication keep on going over there between them. Now this predominantly goes down to indicate that something had happened over there during that period, and thereafter, Malaj, the FIR is said to have been lodged. The FIR came to be lodged as document annexure 2 on 27/21 for an incident said to have taken place on 15/9 to 17/9. Now that FIR is there at page number 28, which was so lodged. जी पेज नंबर That is page number 28. 28 with the petition or with the document? No, 28 with the petition, Manoj. जी Now this is the incident is on 15/9/20 to 17/9/20, FIR on 27। हाँ, मैं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जिला विदिशा में पदस्थ हूँ। मेरे माता पिता का स्वर्ग में, माता का साय उठने के बाद मेरे द्वारा जीवन साथी .com में मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्ट्रेशन किया। उस साइट पर एक इस्माइल नाम के व्यक्ति ने उस व्यक्ति रुचि देखकर सो करके इस्माइल से पहले शादीशुदा, किंतु पहली छवि ने ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। दूसरा ने क्या करना चाहता है। इस्माइल ने मुझे 15/9/20 को भोपाल आ रहा हूँ। एंड दिस लेडी वॉज ऑल्सो ऑलरेडी अ डिवोर्सी। सो ऑल्सो द एप्लीकेंट के बारे में कहते हैं कि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड इन द पास्ट। इस्माइल ने मुझे 15/9 को भोपाल आ रहा हूँ, हम निकाह कर लेंगे। इस्माइल मुझे अच्छा तो वो कर लेना, निकाह की सारी तैयार कर लेना, भोपाल आके सारे बुक कर सारा पैसा दूँ। मैंने विश्वास कर नूर सबा फिजा में एक कमरा 5 दिन बुक किया। मैंने एडवांस पेमेंट किया, मेरे पास उसका बिल है। दिनांक 15/9/20 को इस्माइल मुंबई से फ्लाइट से नूर सबा होटल आया। मुझे निकाह करने बोल कर दुल्हन लिबाज में आने की इसलिए तैयार हो गए कि होटल में पहुंचने के बाद इस्माइल ने बोला काजी आ रहे हैं क्या, पर काजी नहीं आए। तो इस्माइल के कारण all this is basically wrong and false because the marriage had already taken place between them on 7/9 itself, which goes down to indicate from the predominant documents which are there. नहीं आए तो उसको लेके फिर मैं चले गया बेडरूम में कपड़े बदलने के लिए। इस्माइल जाने के लिए कह के वीडियो दिखाया, मुझे डर लगा। इसमें मुझे वीडियो दिखाया दिनांक 15/9 को 10 बजे, 17/9 को 12 बजे धमकी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 17/9/20 को इस्माइल ने मुझे माता पिता की अचानक तबियत खराब हो गई इसलिए अर्जेंट मुंबई जाना पड़ेगा। माता पिता की तबियत ठीक होने के बाद में भोपाल तुम निकाह कर लूंगा। मुंबई जाकर तो इस्माइल सैयद ने कोई उत्तर नहीं दिया, फोन रिसीव कर माता पिता का साया नहीं होने के समाज में बदनामी डर से रिश्ते खत्म करें। मैं कई प्रयास के नहीं माना। मैंने काफी समय पता चला इस्माइल के बुरे आचरण एक व्यक्ति और मुझसे निकाह का भरोसा दिया कि दूसरी शारीरिक संबंध बदनामी के डर से आज किसी को इस्माइल
ने निकाह करने का प्रयास करती थी। जो घटना घटित हुई उस नहीं चाहती किसी घटे, इसलिए इस्माइल के पिता के साथ में कानूनी कार्रवाई रिपोर्ट करती है, कार्रवाई की जाए। Now this FIR was so lodged. Now thereafter the lady had appeared before the SHO also. और उन्होंने बोला कि हमारा आपस में सुलहनामा हो गया था। That document is Annexure 4, page 35. जी, ये एप्लीकेशन दी है इन्होंने 1/1/21 को जी P4 की जो एप्लीकेशन है जी 1/1/21 को 9/9/21 जी तो इसमें 1/1/21 1/1/21 1/1/21 को दी है जी एप्लीकेशन, ठीक है। जी। और ये FIR उसके बाद इन्होंने इसके बाद FIR रिकॉर्ड की गई है सर। और उसके बाद आपके समक्ष आप देखेंगे मैंने ऑर्डर आपके समक्ष पेश किया। व्हेन शी अपीयर्ड बिफोर दिस कोर्ट एंड शी मेड अ स्टेटमेंट बिफोर दिस हॉल कोर्ट अलोंग विद हर काउंसिल बिफोर लॉर्डशिप्स। जी नाउ व्हाट आई हम्बली सबमिट माय लॉर्ड, द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ओवर, शी हैज अ स्टोरी, आई हैव माय स्टोरी, I am in jail. Now, no useful purpose is being served by merely detaining the present applicant in jail. He has come down and he has been. If I just may invite your lordship to lordship's own order, which I just forwarded before this hall court. yes, Kindly come down to the order, my lords, passed under section 482. yes, Today, जी Today, complainant along with the applicant are present in person. Complainant submit that she contacted Nikah with the applicant on 7/9/20 by online mode. An affidavit in this regard has been filed with this petition marked as Annexure A3. She further submits that since she was unable to contact her husband, that is the present applicant, therefore she had lodged an FIR on 27/21. Now she is working as a nurse in a hospital and her husband is carrying out the work of property dealer builder at different places and they have reconciled the differences. Therefore, this is a fit case where, to action benefit of quashing of the FIR on the base of compromise. She detained Shivasa Learned respondent number state has he opposed it. Thereafter lordship dealt with, and ultimately though the lordship had dismissed the petition, but the fact emerges that the lady herself had come before the Honorable Court, made a statement, and this is what I am submitting before the Honorable Court now, my lords. Now there is nothing on record so as to indicate. Well, it's not a case where the prosecutor says a young girl aged about 18 years or 19 years. Now, if there was already a marriage, rest of the things would not be an offense under section 376. It would be covered under the exception number 2 of section 376. Yes, it will be covered under if marriage is proved. If marriage is proved. Now, this is what I am humbly submitting before this Honorable Court, that all this is there. Now, she has merely declined this particular aspect merely to pressure. Now, my lord, thereafter, why did the lady come down at that particular juncture before this Honorable Court? Because there was some talks of compromise, certain amount of money was paid. And there was a time-bound period to make the payment, and after the matter is so called, but somehow the quashing never took place. It is the predominant dispute between the husband and wife pertaining to marriage. Right. Assuming for the sake of argument, Malo, that today also it's not a case where the prosecutor says a young girl aged about 19 years or 20 years, she's a fully grown-up woman, conversant with the ways of the world, already divorced once, and thereafter she comes down in a relationship. And thereafter, certain disputes arose between them. And I humbly entreat before the Honorable Court that these disputes would be covered under the realm of disputes of a marriage, not a case under section 376 of the Indian Penal Code. Right. The charge sheet has been filed. I would not run away. I would be available for the purpose of trial. May I submit? Please. First, my lord, conduct of the present applicant vary, my lord. Seen that, my lord. At present, 438 application is pending before this, my lord. Before my lord. And they 438 जब आई थी, they have prepared forged document, फर्जी निकाहनामा, and my lord, thereafter one crime is also registered against them, my lord. FIR crime number is there, my lord. Crime number 604/22, 420, 467, 604/2022 under section 420, 467, 468, 471. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए इन्होंने कूट रचित निकाहनामा का निष्पादन किया. Second is that, my lord, कि there is a specific amendment made in 164, my lord. Relevant part, my lord, may be permitted to read that part.
समय ज्यादा होने से 9:30 से 10 बजे के लगभग मैंने इस्माइल से पूछा कि काजी साहब और गवाह नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आज बहुत रात हो गई है, तो मैं कल आ जाऊंगा। आप आऊंगा और कल सुबह निकाह करवा दूंगा और तुम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेना। मैंने उससे कहा कि मैं चली जाती हूँ, तब काजी साहब आए तो मुझे बुला लेना। तो वह मुझसे बोला कि इतनी रात को दुल्हन के लिबास में मत जाओ, चेंज कर लो। मैं कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम चली गई। मैं जब वापस आकर अपना फोन देखने लगी तो इस्माइल ने मेरा मोबाइल ले लिया और सिम भी निकाल ली। मैं मोबाइल ढूंढने लगी तो इस्माइल मुझे पास बुलाने लगे और छूने लगे। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मोबाइल मांगा तो उसने कहा कि मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। बाथरूम में पता नहीं इस्माइल ने कैमरा लगा रखा था या मोबाइल रखा था। वापस आकर मुझे कहने लगा कि इधर आओ, तुमको मोबाइल दिखाता हूँ। इस्माइल ने मेरा फ्रेश होने व कपड़े बदलने का पूरा वीडियो बना लिया था। मैंने उससे कहा कि मैं काउंटर जा रही हूँ, मैनेजर को बताती हूँ। उसने पता नहीं किसके नंबर पर मेरा वीडियो सेंड कर दिया था। वह मुझे बोला कि अभी तो ये वीडियो ऐसी जगह भेजा है जहां से कभी कहीं नहीं जाएगा, अगर तुम ज्यादा एडवांस बनोगी तो वायरल कर दूंगा। उसने मुझे कहा कि मुंबई में तो यह सब आम बात है, आ जाओ मेरे पास। वीडियो की धमकी देकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार कर और शारीरिक संबंध बनाए। मैं रो रही थी। उसने मुझे दिनांक 15/9/20 की रात से दिनांक 17/9/20 के दिन के 12 बजे तक लगभग 12-13 बार मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और दिनांक 17/9/20 को 2 बजे की फ्लाइट से चला गया। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मेरे पिताजी को गैंग्रीन हो गया है और उनका पैर कटने लगा है, इसलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। और चला गया। मुझसे कह कर गया कि वह उसकी मम्मी को लेकर आएगा, वापस आकर निकाह करेगा। मैंने इस्माइल को निकाह में 28,999 रुपए की घड़ी देने के लिए खरीदी थी। इस्माइल मेरी घड़ी और सोने के कान के भी ले गया। मैंने घर जाकर देखा, तब मुझे पता चला। माय लॉर्ड, दिस इज द स्पेशल अवेयरमेंट माय लॉर्ड। इसका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया अभी तक कोर्ट में? चार्जशीट फाइल हो गई, आपने बताया 1/12/2022 को। मैं उसकी जानकारी ले लेता हूँ। सेकंड क्राइम इज माय लॉर्ड रजिस्टर्ड ऑन अंडर सेक्शन 420 माय लॉर्ड, उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उसका चालान भी पेश हो गया 420 का सर, वो आपके डायरेक्शंस पे आदेश पारित हुआ था, वो रजिस्टर हुआ था। जी जी ये आपने आदेश किया था एमसीआरसी नंबर 40797 में आपने आदेश किया था। जी This order was passed by Lordship on 21st of September 2022. जी On the contrary, the police is required to register a case of forgery and cheating against the applicant on the basis of report of concerned Kaji and the prosecutrix. जी। Now, charge sheet has been filed in that case. Now, my lords, maybe can, if my learned friend is done up. आप और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं जी जी सर, निवेदन मैं आपसे ये कर रहा था, ये मैंने दूसरा एक और डॉक्यूमेंट फाइल किया। Now, my lord, it's very simple on the part of the prosecutors to come up today and make a statement कि ना वहाँ काजी है ना कुछ हुआ। Now, अगर काजी वाली बात अगर वहां पे आती तो 376 का मुकदमा तो कायम होता नहीं। अब how did this happen and why did this happen? Kindly consider this aspect. Now, the marriage predominantly had taken place. This Kaji was procured and was got over there by the bhabi of the prosecutrix, which is evidently clear in the communication which I have filed before this court. Now, these communications have not been created by us. These are communications which we handed over to the police. After all this was going on, we handed over this phone, and Lordship would find that this phone, he handing the police, and thereafter police is said to return back the phone. Now, what they say कि उसका video बना लिया. That's another easiest thing in the world today to make an allegation. I'm not going into that allegation. No, now today what I humbly submit, neither the man has been arrested, his phones have been seized, neither is there any video, nor is there any obscene material except the bald version. We are not going into all those things. Only issue is what was the provocation for the Kaji to deny that nikah Not which reason- took place on 7/9. It is not 15/9. It is 7/9. 7/9 की शादी हुई ना सर, 15/9 नहीं बताया उसको काजी डिनाई कर रहा है ना, शादी को। मैं 15/9 की शादी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं वो तो शादी समझ 7/9 की बोल रहा हूँ कि शादी होने के बाद he came from Mumbai, he came down to मैं Bhopal. तो बोल रहा हूँ 7/9 को जो शादी हुई सर। है उसको काजी ने डिनाई किया है। जी। इन्होंने यही तो प्रोड्यूस किया था ये जब आपकी 482 की एप्लीकेशन कंसीडर हुई थी। सर, काजी डिनाइड दैट ही हैड no, नॉट। that was not in the petition, that was in the bail application which was passed by Lordships. Okay. That was the third bail, second bail which we had filed at that point. Now what I humbly submit, my lord, if Lordship may be kindly consider this aspect, she herself in a communication admits this fact that there has been a nikah. काजी और काजी लाने वाली बात जो है, काजी वाली बात, काजी साहब घबरा गए कि अब हाईकोर्ट इंक्वायरी करे मेरे खिलाफ भी मुकदमा कायम हो जाएगा।
तो हाईकोर्ट उनने इन सब चीजें दूर करने के लिए उनने बोल दिया मैंने इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया. That is the easiest thing, sir. Now, how do I say that? Kindly consider this aspect, sir. All this is the communication mallet which is there, which was handed over to the police. Kindly come down to this I number 202523. 2025. Kindly come down to page number 23. This is the bhabhi of the prosecutrix communicating with the applicant. Page number 77. 27. जी. Would Lordship get the first communication? Page number 77, sir. Page number 77 ये. ये है सर 25/8/20 को 3/5/25 को. जी. भाभी खुशी हमने उसका मोबाइल नंबर उसमें सेव किया हुआ, इसका नंबर है, इस लेडी का नंबर है. Her phone number, if Lordship are kind enough to kindly have, her number is 6261037770 is her phone number. नागपुर वाली भाभी काजी का इंतजाम कर लेंगे, वो सब कर लेंगे. सर्टिफिकेट इज ऑफ द नागपुर. जी. ये उनने बताया सा. इस्माइल ओके. इस्माइल आप बात कर लो. भाभी खुशी वो एक्सपर्ट है सब काम में. भाभी फिर 3:06 में ये जो भाभी खुशी जो आ रहा है जी, ये जो कम्युनिकेशन जितने हैं ये दे आर फ्रॉम दैट लेडी हु अंडरटुक द वर्क ऑफ अरेंजिंग फॉर अ काजी एट नागपुर. No, not at Nagpur, on the online mode. Online, whatever it is. But And she is the bhabhi of the prosecutrix. It is not I have procured or got this kaji. Kaji has been got by the side of the prosecutrix. कौन किसकी भाभी है? दैट इज द ट्रायल. मैं नंबर दे रहा हूँ सर 6261037770 उसका नंबर दे रहा हूँ. रिपोर्ट बुलवा लेते हैं सब. ये तो मैटर आप सारे डॉक्यूमेंट आप ये जो मैं कागज दे रहा हूँ आप इनका वेरिफिकेशन करा के बुला सकते हैं. ऑल दिस इज देयर सर एंड दिस वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस. सर द रीजन समथिंग एल्स हैपेंड. जी. But the dispute now is the initial amount which was claimed for settlement जी. was 15 lakhs. जी. Now the amount has increased and it has gone to 30 lakhs. जी. The amount of money, half of the amount of money towards this settlement of marriage was paid, and that was the reason the lady came before this Highcourt to at that particular juncture. And later on, certain disputes arose when the amount it has arisen to 30 lakhs. Sir, kindly consider this aspect. ठीक है. I'll consider all this. Now these documents may kindly be if Lordship wants to verification. नहीं, I don't want any verification. We'll wait. I'll consider everything. तुम लीजिएगा. Consideration should not be so that I have made a submission and it comes down over there. Kindly consider this aspect. Why this man should be kept in jail now today? Why the man should be kept in jail today? There's nothing which is there, sir. The investigations of a charge sheet has been. Well, Lordship wanted the man to go and he went in. No, I never wanted. No, Lordship had observed that let him surrender and thereafter the bail application may be considered. He went and surrendered, and thereafter this order. What actually happened with this man, and this is how this man has been cheated over here. It is not that the woman has been cheated; it is the other way around. The man has been cheated over here. And today, my lord, in this dispute, the grounds are that there's a delay which is not explained by the prosecutor. All this has happened. The FIR which has been so lodged over here, if Lordship are kindly consider. But today, Lordship are not considering my whether I would be acquitted or not. What is to be seen whether I would be available for the purpose of the trial or not. Yes. I'm available and thereafter. मेरा इतना कहना था आपसे कि प्रोसिक्यूट्रिक्स को एग्जामिन हो जाने दीजिए, उसके बाद आ जाइए. आप आदेश कर दें. अभी कर दें सर. 2 हफ्ते बाद के लिए इसको रख दें. नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, आप इसको अभी विड्रॉ कर लीजिए. जब प्रोसिक्यूटिव एग्जामिन हो जाइए, Sir, I'm giving you liberty right now to and this about the prosecutor doesn't come, sir. Why she will not come? It is they will have to bring her. They could have got her, my lord. I've been in jail now literally for 2 months. They could have got her. अरे भाई, अभी तो चार्जशीट फाइल हुई है. चार्जशीट 1/12 को फाइल हुई सर. 1/12 को 2 महीने तो हुए अभी. नहीं 2 महीने हुए सर. तो हम इस प्रकार के केस में हम कितने दिन आदमी को जेल में रखेंगे जहां पर इट्स अ डिस्प्यूट ऑफ अ मैरिज व्हिच हैज टेकन प्लेस. आपसे ये कह रहे हैं प्रोसिक्यूटरी एग्जामिन हो जाए, आप आ जाइए. Let me just seek instructions regards to that aspect. पूछ के फिर आप बता दीजिए. Yeah, I'll seek that, sir. जी. Next case. Just seek